R software. You can use it R software or different graph pad or and different R, Python, SPSS, Minitab, but whatever be the software, basically it depends on which type of technique you are using. So how to start the SPSS in your system? Just see to start SPSS from Windows taskbar, choose start, then click all programs, then click on SPSS for Windows, and you get the file where you get the, on the left hand side, you get the data window and variable window. So just let me see you how to get these things. देखिए आपको ये शो हो रही है विंडो, screen is visible, screen is visible. Yes, okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so once you click the SPSS, you get this window. So here on the left hand, you get the two sections, that is data view or variable view. So in data view, you have entered all the data you have. It may be depend on your variable. In variable view, you have different sections like name, type, width, decimals, labels, values, missing values, columns, aligns, measure. This is the most important part of your SPSS, because if you enter data properly, अगर आप data properly enter करते हैं, then definitely you will get the good result. अगर आपने data गलत put किया, if you had wrongly entered data or wrongly coded data, then it will directly impact on your result. So how can you enter the data? The first thing is name. In variable view, the first thing is name. Name में आपको क्या करना है? It does not consider any spacing. So it is the name of your variable. Suppose in your questionnaire, you have gender. You just like the gender. Just click the gender. And this is the type of variable you have. So by default, it consider numeric, but it can consider all these things, but by default, it consider numeric. So just click on it. Okay. And by default, it contains 8 characters. The character, yani column character width is total character width is 8. You can extend the character width. It may be increased by this. Just click on it. 9, 10, 11, 12, whatever be character. So you can consider, by default, it consider 8. So in gender, next column is decimal. In gender, you don't have any decimal. So gender में आप में decimal तो होंगे नहीं. Either it is male or female. So click on, by default, it contains 2. So you just click on 0. Because gender contains male and female, तो आपको gender में 0 put कर दीजिए, और क्योंकि 1 और 2 के form में होगा. Next thing, label. So in name category, in the name column, you just use the short form of your question. In label column, you just use the extended form of your question. Means gender of a respondent, gender of the respondent, and it contains it can, here you can use the spacing also. So gender of the respondent, suppose this is the extended form of your question. So next thing is values. So first thing is value. What here we did, हमें यहाँ क्या करना है कि आपने क्या किया, जेंडर बेसिकली 2 होंगे, मेल एंड फीमेल आपके क्वेश्चन आयर में. तो आपने यहाँ पर करना है कोडिंग, because here you consider the numeric. So just click 1 value and label for male. Click on it, then click add. आपको ऐड करना. अब यहाँ पर आपने 1 के लिए कोड कर दिया मेल के लिए, और 2 सपोज करिए 2 कर दिया आपने फीमेल के लिए. तो जैसा आप चाहें यू कैन यूज इट. तो आप अकॉर्डिंग टू योर easiness you can code it. So 1 for male, 2 for female. Then click OK.
तो अब आपने यहाँ पर न्यूमरिक कर दिया, जेंडर मेल एंड फीमेल था अभी आपके पास, बट यू कैन कोड इट एज 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल. Missing values, how many missing values you have? Suppose none, there is no missing value in your data, you can consider it none. Column, by default column width is 8. Align, you can data align left or right or middle, you can use it. Measure, so gender basically given in, there are 3 scales: nominal, ordinal and scale. तो अभी आपको कितनी स्केल दिख रही है? नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड स्केल. सो we have 2 types of data: quantitative data and qualitative data. So quantitative data, we have 2 types of scales. When you use the quantitative, means quantity, that will use the 2 types of scale: ratio scale and interval scale. And here we just consider the scale concept for quantitative. And when you have a qualitative data, because your gender is in male and female, there is a quality, so you can use nominal or ordinal. But nominal data क्या होता है? Nominal data, it is, as far as name concerned, it is based on name. Nominal, suppose gender male female, you can use in male and female, it is your nominal data. और मेल को आपने 1 कर दिया, फीमेल को 2 कर दिया, तो भी ये नॉमिनल रह गया, जिसमें रैंकिंग नहीं होती है. नॉमिनल में रैंकिंग भी नहीं होती है. नॉमिनल सपोज करिए रिलीजन, मुस्लिम फॉर 1, हिंदू फॉर 2, क्रिश्चियन फॉर 3, सिख फॉर 4. तो देयर आर नॉमिनल डेटा इज हियर, यू कैन यूज इट नॉमिनल डेटा. तो यहाँ पर भी जेंडर है, देन यू कैन यूज इट नॉमिनल. सपोज आपके पास अगर डेमोग्राफिक सर्वे है, यू कैन यूज डेमोग्राफिक सर्वे. जस्ट क्लिक एज. सपोज यू हैव एज, देन एज इज ऑल्सो numeric. Age is also numeric. By default it contains numeric data. So 8 character, by default 2. So age is also not in the decimal point, suppose. So you can use it 0 and you can write it age of the respondent. तो आप इसको लिख सकते हैं age of the respondent, age of the respondent. अब यहाँ पर values, no need to describe the age in different codings, so just click none. And missing values, there is no missing value in your data. Column, by default it contains column characters 8, right or left or right, whatever be the alignment, it doesn't matter. And measure, here your data is continuous, because 38, 48, 22, 23, these are the age in numeric form, so then it is a quantitative. You can use it scale data. Scale data आप ले लेंगे. तो इस तरह से हम इन सारी वैल्यूज को फिल कर सकते हैं. Clear everyone? If you have any doubt, okay, you can fill, because it is very important part. Data entry is the first and most important part of your analytical purpose. और data entry अगर सही हो जाती है तो आपको रिजल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा. तो इस तरह से हम डेटा फिट कर सकते हैं. इसलिए, और डेटा व्यू देखिए, वेरिएबल व्यू में देयर यू हैव टू, सपोज यू हैव, आई जस्ट एंटर द जेंडर एंड एज. हियर देयर आर 2 वेरिएबल्स. आपके पास यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं. और इस केस में अब हमारे पास नाउ क्लिक ऑन डेटा व्यू. अब आपने डेटा व्यू पे क्लिक किया, अभी आपने वेरिएबल व्यू में एंटर किया, वॉट एवर बी योर क्वेश्चन आयर, क्लिक जेंडर एज. सपोज यू हैव 13 different questions, you just click Q1 and Q2. आपने इसको Q2 कर दिया. और यहां पर आप क्या करेंगे? Just click the just write the extended form of your question. Are you is there any improvement in the you just in the English class? Suppose you are the scholar of English, you just question 1 is based on, is there any improvement in the class after the lecture? Just click Q1 is there any improvement in the class after the lecture? So you can write it, whatever be your question. It is an extended form. So here you can use the short form without spacing, and in labeling you can use the extended form of your question. तो हम यहाँ use कर सकते हैं. अब ये देखिए यहाँ पर 4 वेरिएबल्स हो गए.
There are 4 variables you have, and now you have to enter all these data. Just click on it. You have gender, male is 1 and 2 for female. So 1, suppose first respondent is 1 male, 2 female, 1 2 1 2. Suppose this is a hypothetical data. I have just give you example. So suppose you forget that what is the labeling of your data. Just click on gender, just click on it and go to this section, this one, label, value labels. Click on it. देखिए आ गया male female. Just click again, 1 for male, 1 for female. क्या होता है हम भूल जाते हैं कि 1 का मतलब क्या था. What is the coding for 1? Just click on it. 1 for male, 2 for female. Click. And age is also numeric. 23, 34, 46. It is based on your question. और Q1 जो भी आपके रिस्पोंडेंट हैं 1, 2, 3, 4, and this is the values. These are the values 1.00, 2.00, because you get the decimal values after the you get 2 values after the decimal, because you have considered here 2, because if you remove it, consider 0, then it will be Q1 will be 1 2 3 4. तो अगर आपके डेटा में डेसिमल वैल्यूज हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप पुट कर लीजिए डेसिमल्स वैल्यूज को. तो इस तरह से हम फिल कर सकते हैं डेटा एंट्री में. डेटा एंट्री, इसीलिए मैं अक्सर इसको थोड़ा टाइम ले रहा हूं, क्योंकि डेटा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बगैर अगर डेटा एंट्री नहीं सही करते हैं देन डिफिकल्ट टू अचीव योर रिजल्ट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज so this part is already done. Creation of data file in SPSS, ये हम डिस्कस कर चुके. And when you click on SPSS, you get sometimes you get this window. Just click on it, types in data. You have different options. Just when you click on SPSS in your laptop or system window, desktop, you get sometimes you get this type of window. Then click on types in data, then click OK. तो ओके कर देंगे तो आपको इसी तरह की ये विंडो मिल जाएगी जैसे अभी हमने शो की. इस तरह की विंडो मिल जाएगी. देन यू गेट द सेम डिफरेंट ऑप्शन, वेरिएबल व्यू एंड डेटा व्यू, ये हम आपको बता चुके. देन वेरिएबल व्यू इज यूज्ड फॉर वेरिएबल्स, व्हाटएवर बी योर वेरिएबल्स इन योर क्वेश्चनर वेरिएबल्स, age, gender, demographic data. If you have different questions, just write Q1, Q2, Q3, Q4, whatever be the question. And different sections, I already talked about the different sections, and this is already done. Data view displays the actual data values. Variable view display the variable definitions, different variables, demographic data, questionnaires. You can use it. Suppose you have an example. Suppose we have an example, and what is the example? Just let me show you the example of the data set. And the slide is, let me share with you. Just suppose and just 2 minutes, I want to share the original sheet of the data set. Yes. So suppose now this is the, suppose you have a questionnaire to study the health condition of people in a city. A random sample of 25 users are taken and following informations are collected. Following informations are collected. First one is person. How many? 25 persons are there. Gender, male, female, male, female. These are the gender of the respondent. Religion, it is based on in different religions, Hindu, Muslim, Sikh, Christians. Age, different ages of the respondents.
monthly income 03 because it is a coded data. 0 for different codings means 0, 1, 2, 3. 0 means monthly income below rupees 2000, between rupees 2000 to 5000. 2 means between rupees 5000 to 8000. 3 means between rupees 8000 to 10,000. And gender coded for male for 1, 2 for female. Religion 1 for Hindu, 2 for Muslim, 3 for others, or you may use it 3 for Christians, 4 for Sikhs, and 5 for others as per your convenience, as per your use. And then monthly income is in coded form. Health score is also given, personality score and activity score. So this is the data set, some hypothetical data set just for your information. And coding this scheme as per gender, religion, monthly income is defined. So this is the, suppose this is your question. Now come to the original data set. So this one is your data set: person, gender, religion, age, monthly income, health score, personality score, activity score. So these are the score. I have just entered all the entries because it takes time. So I have just entered all the entries already in SPSS. So what are the variable? So this is the data view. This is the variable view. So person, gender. So person number, all are numeric. Gender, respondent of the gender, 1 for male and 2 for female. We can use it. Religion, in your questionnaire, 1 for Hindu, 2 for Muslim, 3 for Sikhs, 4 for Christian. So you can use it as per your need. आप इसको 3 पर भी 1, 2, 3 पे others कर सकते हैं. तो अगर चाहते हैं कि नहीं सभी रिलीजन की हमें पता चले तो आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं. 3 for Sikhs, 4 for Christian. तो एज पर योर नीड आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कोडिंग्स. ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चनायर में क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो नेक्स्ट है हमारा एज. Age is also age of a person. There is no category. Monthly income, there is a category in monthly income: 0 for below 2000, 1 for 2000 to 4000, and 2 and 3 different codings are there. And health score, personality score is also there. So this is the data entry for the question I have shared with you. इस तरह हम इसको शो कर सकते हैं अपने डेटा सेट को. तो डेटा हमारे पास, ये देखिए सारे डेटा हमारे शो हो रहे हैं. ये सारे डेटा हमारे शो हो रहे हैं कि पर्सन, जेंडर, ये सारे हमने फिल कर लिए. अब अगर हम देखें, नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसके बारे में हम बात कर चुके, डिस्कस कर चुके. नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल व्यू. ये भी हम डिस्कस कर चुके. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शंस इन योर वेरिएबल, इन वेरिएबल व्यू: टाइप, with decimal, labels, values, missing values, column, align, measures. So different sections are there. I have already discussed. मैं ये बता चुका हूं आपको. फिर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया, नॉमिनल ऑर्डिनल के बारे में भी हम बात कर चुके, और उसके बाद हमने ये न्यूमेरिकल कंसीडर किया. नेक्स्ट आता है कि हाउ टू इंपोर्ट योर डेटा फाइल. आप कैसे कॉल करें, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. It is very important for all the researchers to enter your questionnaire in the Excel file. तो Excel file में questionnaire आप जो पुट करें वो बहुत ध्यान से हमें पुट करना होता है, क्योंकि questionnaire में जनरली हम क्या करते हैं कॉल करने में कि अगर हमें SPSS पे वर्क करना है then there is no need for, you have to make file for SPSS. क्योंकि जो आप लेबलिंग करते हैं, सपोज करिए आप एज आप लिख रहे हैं, तो एज SPSS में अगर आप लिखते हैं तो इन नेम एज इज
age of the respondent, so there is a spacing, so no need to make space in your Excel file. तो एक्सेल फाइल में आपको एज ऑफ द रिस्पोंडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट राइट द एज एंड देन Q1 for question 1, Q2 without spacing, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, and just remember the coding. And one and most important thing, you have to make code before calling the data. Means कि जब आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो सपोज करिए कि जेंडर है आपके क्वेश्चन आयर में, then you have to use the code for the male 1, 2 for female. यानी कॉल करने से पहले एक्सेल में ही आप उसको कोडिंग कर लीजिए, 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल, तब उसके बाद कॉल कीजिए। अदरवाइज अगर आपने कॉल किया डायरेक्टली तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि आपका जो डेटा होगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज इट इज मेल एंड फीमेल, और देन आप जब उसको कोड करेंगे तो वो टोटल जो डेटा है वो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये डिफिकल्टीज आती हैं जनरली। So you have to call your data after the coding in Excel format. तो Excel format में बहुत ध्यान करके आपको Excel sheet में डेटा कॉल करना है। डेटा किस तरह कॉल करेंगे हम? Just click on file in SPSS, then open, then click data and just click the open file and then click OK. Now I want to share with how to call data in SPSS. कैसे कॉल करेंगे डेटा फाइल एसपीएसएस में, देखिए। सपोज you have a new file in SPSS. This is your new file. How to call data in SPSS? Just see the file option in your right hand, left hand top file option. Just click on it. Click on file पे आप क्लिक करेंगे, then click on open. Just click on file, click on open, then click on data. Just click on data पे क्लिक करेंगे। अब just choose the path where you have saved your data, जहां आपने डेटा अपना सेव कर रखा है। सपोज मैंने अपना डेटा डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। and which format? In Excel format. Just click on Excel. File type, click Excel. So just go to desktop where you can save your data and just click the format of your file. Your file format is in Excel. There are so many different formats are there, but just click I have saved my data in Excel. Just click on Excel and this is data workshop file. Then click open. अब देखिए ये मिल गया, जैसे ही मैंने क्लिक किया हमको ये डेटा मिल गया, यानी दिस इज द रेंज ऑफ योर डेटा सेट। जस्ट क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो आपने जैसे ही डेटा पे क्लिक किया आपको ये पूरा डेटा कॉल कर लिया। आपने एक्सेल फाइल की सारे डेटा को कॉल कर लिया, पर्सन, जेंडर, रिलीजन, एज, इस तरह से मंथली इनकम, हेल्थ स्कोर, इस तरह से हमें सारे डेटा एंट्रीज मिल गई जिस तरह हमने एक्सेल फाइल को सेव किया था। अच्छा, एक्सेल फाइल, वन थिंग ऑल्सो आई वांट टू शेयर कि एक्सेल फाइल मैंने कैसे बनाई थी। एक्सेल फाइल, हाउ टू मेक एक्सेल फाइल फॉर द गिवन एग्जांपल। तो इसको देखिए, मैं इसको भी शेयर करना चाहता हूं आपसे। देखिए, सपोज दिस इज द एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल शो हो रही है एवरीवन? यस, सभी को एक्सेल फाइल शो हो रही है। So this is the person, gender as per the questionnaire. जैसे भी अभी मैंने आपसे क्वेश्चनायर शेयर किया, उसी क्वेश्चनायर पे बेस्ड है हमारा ये एक्सेल फाइल। देखिए, पर्सन विदाउट स्पेसिंग, जेंडर, रिलीजन, एज विदाउट स्पेसिंग, मंथली इनकम विदाउट स्पेसिंग, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नेम। इन वेरिएबल विंडो यू जस्ट गेट द ऑल दीज थिंग्स इन द नेम कैटेगरी। तो यहाँ पर आप स्पेसिंग कंसिडर नहीं करेंगे। स्पेसिंग अगर आप कंसीडर करेंगे तो कॉल करने में इश्यू आएगा, कॉल नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और फिर हमने क्या की बताया था आपको कि जस्ट एंटर द कोडेड फॉर्म। आप यहाँ पर कोडेड फॉर्म भी यूज करेंगे। कोडेड जेंडर के लिए 1 2 3 ऑलरेडी कोडेड हमने पहले से कर रखा था, और मैंने आपको बताया भी कि बिफोर कॉलिंग द डेटा कोडेड योर
डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट, तो कोडेड कर लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए कि बाद में आपको फिल करने में इजी रहे. देन नाउ कम टू द ओरिजिनल SPSS फाइल आफ्टर द कॉलिंग योर डेटा. ये देखिए, दिस इज योर डेटा आफ्टर कॉलिंग. नाउ वेरिएबल व्यू. अब वेरिएबल व्यू में अभी देखिए, अब आपको यहाँ पर फीड करना पड़ेगा. जब आप कॉल करेंगे डेटा सेट में तो आपको लेबलिंग में कुछ भी वैल्यूज दिखाई नहीं देंगी, कोई वैल्यूज आपकी शो नहीं होंगी. तो आप क्या करेंगे इस केस में? यू हैव टू राइट द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ योर क्वेश्चन. व्हाट इज एक्सटेंडेड फॉर्म? रिस्पोंडेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट नेम या नंबर ऑफ द रिस्पोंडेंट. इस तरह आप लिख दीजिए जैसा आप लिखना चाहें. नंबर ऑफ द रिस्पोंडेंट. नेक्स्ट है जेंडर, तो जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट आप कर दीजिए. यू कैन यूज इट एक्सटेंडेड बिकॉज इट कंटेन्स स्पेसिंग. जेंडर ऑफ द रिस्पोंडेंट. नेक्स्ट है हमारा रिलीजन. रिलीजन, इसको भी आप चाहें तो लिख दीजिए या शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख दीजिए रिलीजन. नेक्स्ट इज एज. यू कैन राइट इट एज. मंथली इनकम. मंथली इनकम, you can use it spacing here. Health score, just write health score. क्योंकि जब आप कॉल करेंगे तो आपको लेबल में वैल्यूज नहीं मिलेंगी, तो you can write it here in the extended form. Health score. This is the personality score. Personality score is there. Then is the activity score. Activity score. फिर मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यूज हैं यहाँ पर, दिस सेक्शन इज फॉर कोडिंग. सो जब आप कॉल करते हैं डेटा को ऑलरेडी कोडेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर यू हैव टू एंटर द वैल्यू कोडिंग नेम्स. मींस व्हाट इज द कोड फॉर मेल, यू कैन एंटर इट हियर. यू कैन, व्हाट इज द कोड फॉर मुस्लिम रिलीजन, यू कैन कोड इट हियर. सो वन बाय वन यू जस्ट कंसीडर इट. जेंडर, you can write it. There is no values for gender, so you can fill it. You can fill in your questionnaire one for male, you can write it one for male. Add it, add, then okay. Similarly, 2 for female, you can add it. 2 for female, add it, then click okay. So religion, you have also different religions, different codings for the religion. One for Muslim, so you can write it one for Muslim. आप अपने क्वेश्चनायर के हिसाब से आप पुट कर सकते हैं. क्वेश्चनायर एंड कोडिंग्स, डिफरेंट कोडिंग्स, इट इज डिपेंड ऑन योर क्वेश्चनायर. यू कैन यूज इट. 2 for female. 2 for female, you can use just remove it. 2 for, it is religion. 2 for Hindu, you can add religion Hindu. 3 for Christian, so you can write it 3 for Christian. And as per your data set, you can use it. And age, there is no need for codings in the age. Monthly income, there is a coding also. What is the coding? 0. 0 for what? 0 for below 2000. So you can write it below 2000. Add. तो आप अपने क्वेश्चनायर के हिसाब से यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने पूरा डेटा सेट अपना बना लिया कि हाउ टू कॉल आवर डेटा. कैसे डेटा, एक बार फिर से मैं बता दूं कैसे डेटा कॉल करेंगे. जस्ट गो टू फाइल ऑन द राइट टॉप ऑफ योर विंडो, क्लिक ऑन फाइल, you get new and then open. Just click on file. On the second term you get the open and just click on data. जब data मिलेगा then you can go to the path. जब आप path आपके पास आएगा तो जहां पर आपने data सेव कर रखा है तो desktop और file type. On the second, first name is file name, second one is file type. If you save your data entry in Excel format, just click on file of type. अगर Excel में है तो Excel में आप कर दीजिए और SPSS में है तो SPSS में कर दीजिए. तो अगर मैंने यहाँ पर Excel में सेव कर रखा है तो you can use it Excel and click on it. Suppose this is my data set and click open. तो इस तरह से आपको ओपन करेंगे तो ये आपको डेटा सेट पूरा मिल जाएगा आसानी से, जैसे आपने डेटा सेट बना रखा है. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज द
So this is the part of how to import our data set in SPSS. So इस तरह हम सबसे पहले फाइल पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ओपन, देन क्लिक ऑन डेटा, और उसके बाद उस पाथ पे जाएंगे वेयर वी हैव सेव आवर डेटा सेट, एंड जस्ट क्लिक ऑन व्हाट इज द टाइप ऑफ योर फॉर्मेट, एंड देन क्लिक ओके। तो फिर उसके बाद हम कोडिंग कर देंगे, क्योंकि लेबलिंग हमारे पास नहीं होगी, कोडिंग नहीं है, और जो भी हमने क्वेश्चन आयर में पुट कर रखा है उसको हम वहां पर कंसीडर करेंगे। तो दिस इज द पार्ट ऑफ योर डेटा सेट। सो दिस इज द just description, just I have told you. पर्पस क्या होता है इसका? नेक्स्ट पार्ट इज स्क्रीनिंग ऑफ योर चेक ऑफ द डेटा स्क्रीनिंग। डेटा स्क्रीनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज डेटा स्क्रीनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा जो हमने फिल किया है वो करेक्टली फिल किया है या नहीं, और रेंज ऑफ द वैल्यूज, कभी कदार हम डेटा एंटर करते हैं तो रॉन्गली डेटा एंटर कर देते हैं, तो इसकी वजह से जो एरर अराइज होती है वो नॉन सैम्पलिंग एरर जनरली अराइज ड्यू टू द एडिटिंग, कोडिंग, रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ टेक्निक्स, wrongly handled by a person। तो ये इस तरह से टेबुलेशन, एडिटिंग, कोडिंग, इस तरह की सारी चीजें हमारी आती हैं डेटा स्क्रीनिंग के पार्ट में। और स्क्रीनिंग में मिसिंग वैल्यूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिसिंग वैल्यूज को कैसे जनरली डील करते हैं? मिसिंग वैल्यू को जनरली हम डील करते हैं, देयर आर टू डिफरेंट मेथड। एक होता है आप एक कंप्लीटली हम उसको रिमूव कर दें, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर जनरली कहते हैं कि 5 और 6%, इफ यू हैव 5 और 6% ऑफ योर डेटा सेट इन योर क्वेश्चन आयर कि जो मिसिंग है, तो आप उनको कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, सपोज इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, देन इट विल डायरेक्टली कंसर्न विथ योर रिजल्ट, तो आप डायरेक्टली उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं उसे मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए आर्बिट्रेरी इम्पुटेशन मेथड, यानी मीन वैल्यू से उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, मीन वैल्यू से नियर बाई पॉइंट से हम उसे रिप्लेस कर देते हैं। और मिसिंग वैल्यूज डेटा स्क्रीनिंग के थ्रू हमें मिसिंग वैल्यूज के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि समटाइम्स रिस्पोंडेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड द पार्टिकुलर क्वेश्चन, समटाइम्स they did not fill the monthly income, sometimes they don't show the age of the age does not show the respondent by the respondent। so missing values की चीजों में ये सब आ जाता है। तो इन सारी चीजों को हम डील करते हैं डेटा स्क्रीनिंग में। आउटलायर्स, हाउ टू डील विथ आउटलायर्स जनरली क्या होते हैं कि द पॉइंट विच इज अवे फ्रॉम द बल्क ऑफ द डेटा। तो आउटलायर्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि सपोज हम डेटा एंटर कर रहे हैं और कोई ऐसा पॉइंट है जो बहुत सपोज डेटा सेट है आपके पास 20, 25, 26, 27 और सडन आपके पास एंटर करने लगे 80 आ जाए, तो ये 80 जो होगा ये जो डेटा फ्लक्चुएशन को शो कर रहा है, दैट मींस 20, 21, 20, मोस्ट ऑफ द वैल्यूज लाई बिटवीन 20, 25, बट यू सडन गेट दैट 80 वैल्यू, 80 value। so this is the outlier, because this point is the point which is away from the bulk of the data। bulk आपका 20 to 25 के पास है, और फिर सडन आप देखते हैं तो ये आपके रिजल्ट में भी इंपैक्ट डालेगा। दिस इज क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर यू। देन आफ्टर दैट चेक द नॉर्मेलिटी एंड डिसाइडिंग हाउ टू डील विथ नॉन नॉर्मेलिटी, यानी फिर हमें चेक करना है नॉर्मेलिटी ऑफ द डेटा सेट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मेलिटी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर डेटा सेट। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर statistical techniques। if data follows, we have different statistical techniques। if data follow non-normal, we have different statistical techniques। so when data follow normal, we use parametric test, and if data does not follow normal, we use non-parametric test। so different types of testings are there on the basis of normality। so normality बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके टेस्टिंग्स के लिए। then important thing is how to get the brief
स्क्रीनिंग ऑफ योर डेटा सेट, यानी अगर आपको पता करना हो कि फाइंड द इनकरेक्ट डेटा और हाउ मेनी वैल्यूज आर मिसिंग इन योर डेटा सेट, जस्ट क्लिक द मिसिंग वैल्यू, और I want to tell you the how to check the frequency of your data set, how many values are missing, what is the coded values, frequencies. तो कैसे आप देखेंगे, just I want to share with you. Okay. This is the data set you have. So just you want to show the brief structure of your data set. Just click, this is your data set, person, gender, religion, age, monthly income, and you don't have any idea of your data set. Just click on analyze. Click on analyze. Analyze पर आप जाएंगे. Then click on descriptive statistics. Then click on descriptive statistics. You get the different options on right hand side. Frequencies, descriptives, explore, cross tabs, ratio, PP plots, QQ plots. So there are different options are there, because you are interested in how many data entered incorrectly, how many data entries are wrong, or how many data entries are missing, what is the real frequencies of your data set. Just click on analyze, go to descriptive, go to frequency. अब आप जब क्लिक करेंगे frequency पे, so there are different all the variables you have in the variable window. तो ये जो window दिख रही है, जितने भी variables हैं, you can get it here. So suppose you are interested in gender of a person. You are interested to find the, is there any value missing in gender of a person? Click on it. Suppose you are interested in religion of a person. Just click on it. How can we do it? Reset it. You are interested in gender of a person. Click on it. Then use this arrow. It will comes in the variable column, variable box. You are interested in religion of a person. Click on it. Just here. You are interested in monthly income. Click on it. And this now come to the statistic. Suppose you are interested in mean, median, mode, sum, percentile. There are so many options of central tendencies. Central tendency, mean, median, mode. So you can use it as per your need. Suppose you are interested in mode, because most of the data are your qualitative. So you can use it mode. You can click on mean. You are interested in variance. Just continue. You are interested in chart. Suppose you are interested in chart. Just click on pie chart, because if you are interested in percentage, you can use it pie chart. So pie chart आपके लिए बेहतर है. Then click on it percentage. Percentage पे आप click कर दें. Then click OK and then click OK. जब आप करेंगे, then after that you get the window. So that is output. This is the output window. Output window देखिए आपको शो हो रही है. Everyone, gender of a person, male कितने हैं? 14 male हैं, female 11. Percentage, what is the percentage? 56. And female 56, 44. What is the religion of a person? Hindu, Muslim, Sikh, Christian. So this is the percentage of a different religion. Monthly income, this is the monthly income. See, this is the gender of a person. This is the pie chart for gender of a person. तो आप इस तरह से gender of a person को pie chart को आप आज just click on, double click, just double click the pie chart. जब आप double click करेंगे, you can get this type of data set. So you can press on this section, data label mode. आप इसको first section पे click करेंगे, data label mode, और ये आपको बता देगा percentage. Just click on data label mode and click on green. देखिए बता दिया 44. And green किसको शो कर रहा है? Green is show for male. आप देखिए green किसको शो कर रहा है? फीमेल को. और आपने फिर क्लिक किया 56 और 56 शो कर रहा है आपका फीमेल को.
Now click on OK. Now click on OK, and you get the different percentage of gender of a person. फिर religion of a person में भी हम देख सकते हैं. Religion of person, Hindu is showed in a percentage of Hindu shows in a say in blue color, Muslim in a green color, Sikh for in a light color, and light skin color, and Christian is in a purple color. But you don't have the right percentage. Just double click on it, you get this value. Click on the first section, label mode. You can click 20% is for Sikh. This color shows the Christian 8%. This color shows the 28. This is percentage of Hindu. This is the 44 is the percentage of Muslim. So you can on click it after click right click, just click on the pie chart. You can and just use the labeling mode. You can get the percentage of different sections as per your need. तो आप इस तरह से अपने रिजल्ट्स को पा सकते हैं. डिफरेंट रिजल्ट को परसेंटेज के फॉर्म में आपको मिल सकती है. नाउ I want to share the PPT. So this is the brief structure. इस तरह से आपको brief structure मिला था. Below 2000 कितनी frequency है, 2%. हर एक का रिजल्ट अभी हमने चेक किया. So next thing is why missing data a problem. मैंने आपको बताया कि missing values means reduce the sample size and loss of data. So missing values also indicate bias in the data. So how to identify the missing values? Missing values कैसे हमें पता चलेंगी? Missing values पता करने के लिए सबसे पहले हम missing analyze, go to descriptive, go to frequency. अभी मैंने रिजल्ट जो आपको शो किया था, इस तरह से हम missing values को पा सकते हैं. जैसे अभी हमने शो किया आपको स्टार्टिंग में. देखिए, अगर हम डेटा सेट पे या क्वेश्चनायर सेट पे चलें, go to final data, go to analyze, go to descriptive, go to frequency, and या अगर हम इसको देखें, no, just I want to share the screen data set. Just click on it, share. So first thing is analyze, go to descriptive, and go to descriptive of your data set. You are interested in religion, you are interested in gender, click on options, sum, mean, whatever you want, just click on it, then continue, then okay. तो अब देखिए जेंडर ऑफ अ पर्सन आपको ब्रीफ स्ट्रक्चर इस तरह से हमें मिल जाएगा. और अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे आपसे कि किस तरह हम उसे डील करेंगे. सपोज करिए गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव एंड क्लिक ऑन फ्रीक्वेंसी. यानी अभी आपको शो करना है कि किस तरह से हम मिसिंग वैल्यूज को डील करेंगे. तो मिसिंग वैल्यूज को डील करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन योर data set. That will be your data set is, I want to remove all the files because so many files are open. Just wait. Okay. This is your file I want to share with you. Now share the SPSS file. Where is data file? I want to cancel all the files because so many files are open. Just 2 seconds. Okay. Now
I want to share the why it is not failed to start the sharing final data of your workshop. Okay, this is how to check the missing values of your data set. Go to analyze, then go to descriptive, go to frequency. You are interested in how many values are missing in your data set. Suppose health, you are interested in check the missing values in activity score. You are interested in monthly income. You are interested in personality score missing values. You are interested in activity score missing values. Just click on statistics, mean, mode, sum. You are interested in SD. You are interested in range. Click on continue. You are not interested in any chart, then click none, click OK. अब देखिए, just go to window and you get the different final workshop यानी data set and the second one is output. Just click on it. अब देखिए output पे आपने देखा तो ये देखिए आपको यहाँ पर statistic दिख रही है different variables. This is the monthly income structure of your data set. This is the personality score structure data set and activity score. How many values? 25 values are there in your data set. How many missing values? 0 missing values are there in your data set. तो कोई values missing नहीं है आपके data set. Mean क्या है? Mean पता चल गया 1.84. Mode is 2. Personality score is 23. Mode is most frequently occurring value or trending value. Standard deviation, range is also here. Range is the maximum observation minus minimum observation. Sum is the sum of all the values. So इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी के थ्रू हमें एक ब्रीफ स्ट्रक्चर मिल सकता है डेटा सेट का कि मिसिंग वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे. सो जस्ट गो टू योर एनालाइज, गो टू descriptive, go to frequency and use your variable in which you are interested. Just click on it and the variable come in the variable window. Just click on statistics and click on the sections in which you are interested. You are interested in mean, click on it. You are interested in mode, click on it. You are interested in sum, click on it. Then continue. You are not interested in any chart, just click none, continue, and then okay. Then after that, you can get all the values, missing values in your structure, in your output. तो आप इस तरह से output में इन सारी values को पा सकते हैं. Now come to the PPT. So this is the values, how to find the missing values. Next thing is how to replace missing values. Replace missing values के लिए मैंने बताया आपको, replace missing values called imputation. So use the imputation method to replace all the missing values. So it is better to use the mean value imputation. Mean value imputation means you have replaced your values because completely उस particular row को delete करना, it is not a good thing because sometimes it contains very important information and it is impact on your result. It is reflect on your result. So it is no need to delete the cases of missing values. Use the arbitrary imputation method. The next thing is outlier. The outlier are extreme values as compared to the rest of the data or the data which is the point which is away from the bulk of the data, that are outliers. So outliers बहुत important part है कि मैंने आपको बताया था. Suppose your data most of the values lie between 20 to 30, but sudden you get the value 90, and so this 90 value is the outlier. It will shows the negative result on negative impact on your result. तो इससे आपके आउटपुट पर भी फर्क पड़ेगा. तो आउटलायर्स को देखना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है. डिटेक्टिंग आउटलायर्स, कैसे हम डिटेक्ट करें आउटलायर्स को? गो टू एनालाइज, गो टू डिस्क्रिप्टिव, गो टू एक्सप्लोर. यानी फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन एनालाइज,
then go to descriptive, then go to explore, then click on statistics, outlier, plots and unclick stem leaf. कैसे हमें मिलेगा? Just we see. This is the, I want to share, this is the data set. ये आपका data set है. Just click on analyze. Just stop, you get analyze. हमें outlier कैसे मिलेगा? Just click on analyze. Go to descriptive, and after that you get the right hand you get different options. You are just click on explore. तो explore पे जब आप click करेंगे, then click on, you are interested in outlier in personality score, click कर दीजिए. You are interested in outlier in activity score, just click on it. Statistics, you are interested in descriptive, just click on it. No need to go anywhere. Just click on plot. तो आपने क्या किया? Click on plots पे stem leaf को unclick कर दिया, then continue. Then go to so there is in just click on statistics, you get descriptive and outliers. Click on outliers and again continue. Okay, so just see the options how to deal with outliers. अब देखिए personality score में 25 values, 100% values, no values are missing, कोई values missing नहीं है. अब ये देखिए आपको यहाँ पर box plot show हो रहा है. This is the box plot. Box plot show हो रहा है किसका? Personality score का. Box plot जो हमें show हो रहा है, ये box plot क्या बताता है? Box plot basically talks about, it is the 5-point summary. 5-point summary होता है box plot. जो 5-point summary क्यों कहते हैं? Because first point is first quartile, this is the second quartile, and यानी minimum value, maximum value, second quartile, and Q1, Q2, Q3 minimum observation or maximum observation. So this one box plot gives you the 5-point summary. तो box plot जो generally होता है वो आपको ये 5-point summary discuss करता है. This is the median, Q2 is the median, and this is called whiskers. तो इसको sometimes कहते हैं box plot और box and whiskers plot. तो this ये जो हाथ होता है, this hand is called whiskers. This one is Q1, this one is Q2, and this one is Q3. And this one, this value is the minimum observation. This is the maximum observation. This hand is called whiskers. तो box plot के through हम outliers को check कर सकते हैं. Similarly देखिए activity में ये 17 जो आ रहा है आपका, ये outlier है maximum, और ये this one is the Q2. तो basically box plot आपको 5-point summary के बारे में बताता है. तो इस तरह हम 5-point summary को भी यानी बॉक्स प्लॉट के थ्रू वी कैन डील विद दी आउटलायर्स, और डिटेक्ट करके हम उसको रिमूव करेंगे या चेक करेंगे. सपोज कभी कदार ये होता है रॉन्गली एंटर्ड डेटा हो जाता है कि ग्रेजुएशन 16 आपने लिख दिया कि आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, और उसमें एज लिखी हुई है. आपने क्वेश्चन, सपोज यू हैव अ क्वेश्चन आयर एंड द रिस्पोंडेंट इज ग्रेजुएट and they wrongly entered their age. Suppose it entered their age is 15, so it is not possible he is graduate or she is graduate in age of 15. So you can just recheck it and put the values, or you can contact it to change the value. तो इस तरह से हम values को deal कर सकते हैं. Next thing is, ये देखिए इस तरह से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी. हेल्थ स्कोर, एवरेज स्कोर, ये अभी मैंने आपको शो किया. ये बॉक्स प्लॉट भी शो किया कि अगर एवरेज स्कोर को हम कंसीडर करें आउटलायर तो 21 एंड 21 वैल्यू इज आउटलायर, 1 इज द मिनिमम वैल्यू. तो इस तरह से बॉक्स प्लॉट के थ्रू हम देख सकते हैं. आउटलायर विद इन द ग्रुप, मैंने बताया आपको विद इन द ग्रुप मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन जेंडर वाइज आउटलायर ऑफ अ पार्टिकुलर वेरिएबल. Suppose you are interested in the outlier within the gender, means male and female. तब आप क्या करेंगे? Just click on analyze, go to descriptive, then go to explore category and move all variables in the window and move gender into the factor list. Why it is factor list? क्योंकि factor list में अगर आप gender को कर देंगे
then it will gives you the all the result on the basis of gender. There is a separate result for male, there is a separate result for female. तो मेल और फीमेल के थ्रू भी हम रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से. देखिए हेल्थ स्कोर मेल, मेल का हेल्थ स्कोर 14 मेल्स आर देयर, 11 फीमेल्स आर देयर, and 14 there is no missing values are there. So you can find out descriptive mean of health score for male. देखिए मेल health score for male is this, health score for female is this. So you can find out the outliers, two different box plots of health scores with respect to the gender. This is the box plot for male, this is the box plot for female. तो इस तरह से if you categorize your data into different section, you can use it not in gender, if you can use it as a religion, religion भी आप use कर सकते हैं. Then you can use the religion in the factor list. तब आप क्या करेंगे, gender की जगह use it as a religion of a respondent in the factor list. Then you get the three different categories: Muslim box plot, and Hindu box plot, and Christian box plot, and Sikh box plots on the basis of health score. तो जैसा आप as per your need you can get the different result. So next important thing is how to deal with normality. Normality क्या होती है? What is normality? Normality means a normal distribution is a symmetric bell-shaped curve defined by two things, mean and variance. Why it is important? Normality क्यों important है? Because if your data is normal, then use parametric test. क्योंकि अगर data की normality इसलिए important है, before applying your test you check the data follow normal distribution or not, because it is based on your analytical test. अगर data normal है, if your data is normal, use parametric test. What are the parametric tests? Parametric tests are t-test and ANOVA. These are the one-way ANOVA, two-way ANOVA. These tests are based on normal distributions, and when your data is normal. And what are the when your data does not follow the normal, use non-parametric test. What are the non-parametric tests? Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney U-test, and Wilcoxon sign rank test, sign test. So there are different tests on non-parametric tests. So check your data is check before applying any technique. Just check your data is follow normal or not. If follow normal, use parametric test. If your data does not follow normal, use non-parametric test. So how to check that data is normal or not? There are three different things. Check your data on the basis of skewness and kurtosis. Skewness and kurtosis. Check your data on the basis of histogram by drawing the curve on it. And the different thing is by testing, by applying the different test on it and check the data follow normal or not. So how can we check the data? I go to analyze, go to descriptive, and go to frequency, and then click chart histogram with normal curve, then click OK. I want to check the data health score follow normal or not, or personality score follow or normal or not. How can we check it? कैसे हम check करेंगे? Go to analyze, go to descriptive, go to frequency. You are interested in personality score and health score. Suppose you are interested in personality score and health score, and you want to check these two variables follow normal data or not. What we will do? Just go to analyze, go to descriptive, and then go to frequency. और जब आप click करेंगे, go to analyze, go to descriptive, go to frequency, and you are interested in personality score and health score, and go to statistics. Statistics में skewness, kurtosis, continue, and go to chart. Chart में you are interested in histogram by drawing the curve with normal curve. Go to continue, go to OK. अब देखिए आपको जो आउटपुट मिल रहा है skewness और kurtosis का, the value of skewness and kurtosis. Kurtosis is minus 0.201 of personality score, health score is 1.896, and skewness is 0.379 and 0.627.
7. And what about this one? On histogram, you can draw the curve. ऐसा लग रहा है कि ये normal follow कर रहा है. It seems that this follow your personality score follow the normal test, and health score also follow the normal test because your curve is bell-shaped curve. लेकिन but sometimes your reviewer in your research reviewer said that no, I'm not saying it is little bit skewed. You can apply any test to check the normality of your data set. So what will we do? So we can apply different things. There is a test in the SPSS, KS test and Shaprovic test. Two tests are there to check the normality test in your data set on the basis of p value. तो किस तरह हम चेक करेंगे इसको? हमें चेक करने के लिए just go to analyze, go to descriptive, go to explore, and you are interested in plots. Go to plots and just click on normality plot with test. अब आपको दिख रहा होगा यहाँ normality plot with test, because reviewer said that no, I am interested in just apply to check the normality of your data by applying any test. So there is a provision in SPSS to check the normality through different testings. Go to analyze, go to descriptive, then go to explore, and suppose you are interested in personality score and health score to check these data follow normal, these variable follow normal or not, then go to plots, and plots click on normality plot with test and then continue, and then click on OK. Then after that you get these values. Just see, test of normality, Kolmogorov, Smirnov and Shaprovic test. These two tests are used to check the normality of your data set. So just see the p value of your personality score here, 0.037 and Shaprovic test is for small test, and Kolmogorov Smirnov test, there are two different things. 0.181, अब आप यहाँ देखिए 0.181, this value, p value, significant means this p value, your alternate hypothesis, null hypothesis is H0 such that your data follow normal, and alternate hypothesis H1 is your data does not follow normal. So p value is greater than 0.05. So we accept our null hypothesis. So in this case, we can say that personality score as well as health score, both p values are greater than 0.05. So we can say that our data follow normal test. तो इस तरह से हम normal test को check कर सकते हैं, our normality of our data set. Now now the next thing is these things already discussed in kurtosis and skewness are not between -2 and +2. The data is far away from the normal distribution. यानी skewness और kurtosis अगर -2 से +2 के बीच में lie नहीं कर रही है, that means the data does not follow the normal, or means it is a thumb rule. -2 and +2 are common rules of thumb. Some statisticians prefer it, but it is better to use the normality test, normality plots with test. तो आप case test और Shaprovic as per your sample आप use कर सकते हैं. Then after that, ये अभी मैंने आपको दिखाया, डिस्कस किया मैंने, Shaprovic test and Kolmogorov Smirnov Shaprovic test. Just 2 minutes. Kolmogorov Smirnov Shaprovic test. So Kolmogorov Smirnov Shaprovic test I've already discussed. Analyze, go to descriptive, go to explore, then go to plot and unclick the stem leaf. By default it consider stem and leaf. No need to click on it. Just click the normality plot with test and click OK. फिर आपको मिलेगा इस तरह से. देखिए health score,
ये वैल्यू मिली और एवरेज स्कोर इसकी सिग्निफिकेंट SIG वैल्यू इज द P वैल्यू. In Shaprovic, SIG value is the P value. Both values here, just see in the Shaprovic test for health score and average score, both values are greater than 0.05. So we accept our null hypothesis because H naught null hypothesis is our data follow normal. Alternate is our data does not follow normal. तो इस तरह से हम normality test के through हम बता सकते हैं और अपने reviewer को show कर सकते हैं कि by using these testing, we can say that these data follow normal test. अब उसके बाद next thing हम कल discuss करेंगे from the descriptive statistics to different testing, P-test, chi-test, F-test, and ANOVA. How to apply these tests, we will consider tomorrow. Yes. Thank you, sir. Thank you very much. Actually, there are some questions, sir. Yes, yes, please. Someone asked, please explain at the scale part why is this scale not ordinal? Roman earlier. Roman, can you all are open the camera? Those want to ask anything, please. Sir, first question is he's saying that. Yes. Yes, please. Yes, please. Okay. You said that. Roman earlier. Sorry, you hear me? Yes, yes, please. Yeah, Yeah, open. gender is nominal, yeah? Yes. But age is scale. Age. Okay. So would you just explain why age is scale? Because scale is just I just told you that there are two types of data: qualitative data and quantitative data. Qualitative data means when you use the characteristics, means gender is male, female, religion, Hindu, Muslim, Christian, Sikh. This is the qualitative data. So you can code it 1, 2, 3, 4, then it will become nominal. But in the case of scale part is a continuous part. When we consider the age in the continuous data, because 25, 26, 27, it is not in the category. So quantitative data are two types. Quantitative data are two types. One is ratio data and the other is scale data. So ratio data and interval data. So in SPSS, in quantitative data, just consider as a scale. So scale, just consider it as a continuous data. So maybe health score is 35 out of 40. Suppose your student marks out of 40, student contains 28, 25, 26, 29, 28. So these in the quantitative form. So here we just consider the scale, because data is continuous. And why not ordinal in age? If you make category in the age, suppose there are different categories in your age. Suppose there are 0 to 40 age respondents in your questionnaire. So what will you do? 0 to 10, make one group 1 for 0 to 10, 11 to 20 for second. You can code it and use ordinal. Because one you, yes, please. Other one is please explain why giving example in Excel as well. I just told you. I'll just give example in Excel format also. मैंने example दे दिया था Excel में भी कि किस तरह इसको फीड करते हैं. शायद इन्होंने पहले पूछा था. तो yes. Yes, please. Your voice is not clear. Please, your voice is not clear, Rafiq sir. Alina Saman asked, sir, explain difference between the Excel file and SPS file. Excel file, once you directly save your data in SPSS, sometimes the person directly save your data in SPSS, and they can
save your data as a SPSS file. So, and sometimes they save data in Excel file. What happened? It is better to use the data in your Excel file, because once you make questionnaire, then you can feed all your data set in Excel format, and after that you can change it as per your need. But once you save in, there are so bulk of data are present in your questionnaire. Suppose 400 or 500 persons are there, so it is difficult to directly save your data in SPSS. So once you save data after filling directly in SPSS and save your data in SPSS file, you can save it as a SPSS. But the problem is it is Excel file open in every of yours in every system, but SPSS file open in that system where the SPSS software already installed. और आप एक्सेल में पहले से ही बना के रखते हैं मास्टर चार्ट, सो इट इज बेटर टू यूज द एक्सेल फाइल. Yes, any more question? Yes, anyone want to? I think there is no any response. Okay, sir. Anyone? Is it possible to find the test in SPSS? Dr. OPR Segram, kindly please open your camera, sir. Yes, I will discuss tomorrow. It is the ratio of, basically F test is used for to check the difference between to check the homogeneity between the population variance. We use F test. So as per our need, we can use it. We can use it as per Okay, your thank you need. very We much, can sir. use Thank you very different much. testing. Thank you very much, sir. Yes. Yes, anyone more? Yes, anyone? I think there is no doubt. Okay, sir. We will see you tomorrow. Thank Okay, you very much. Thank you so much. Wonderful session. And thank you, sir. Thank you very much. Okay, see you tomorrow. Alina, want to ask something? Alina is there. Alina Saman, want to ask something? No. Okay, okay, sir. Thank you everyone. See you tomorrow with different techniques and testings. If you have any query, we will discuss. Okay, thank you, sir.